Hello class 11 students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to lecture 9 of mathematics. But before we begin our lecture, I have a very important announcement to make. We are planning to start your KVPY lecture series. Now, this lecture series would be totally focused on this exam called KVPY, in which we'll be covering the syllabus required for this exam and the questions and the level of questions which you are supposed to do rigorously. Then only you have a chance for this exam. But I'm sure many of you must have heard this name before, and many of you must be aware about this exam, and very few of you might not be knowing this exam at all. So before we start something, we must understand that why do we have to do something. If we don't understand the what and why and the benefits of a particular thing, we tend not to have a clear purpose. And if the purpose is not clear, we get really vague in our efforts. Our motivation, our efforts go really vague, and vague effort, vague motivation results in vague achievements. So for having a right mindset and a right motivation and a right will for putting energy for a particular exam, we must understand first thing, what is this exam? Why do we have to give this exam? What are the benefits and how it is going to help me? And how it is aligned with my bigger goal of getting into the best of engineering college or best of colleges across the country or across the globe. So without wasting much time, I would give you a brief introduction of what this exam is, why do we have to give this exam, why this exam is very important, and how it is aligned with our IIT JEE preparation. Now, first of all, KVPY, the full form stands for Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana. This exam is funded and started by Department of Science and Technology, Government of India in the year 1999. So it is like a 21-year national level fellowship program. So it's a very reputed one. This exam, the aptitude for this exam is basically conducted in two stages. One is KVPY aptitude test, followed by the selected students are screened for interview. Then the second stage goes for interview. So the first stage, the KVPY aptitude test, is conducted by Indian Institute of Science, Bangalore, every year. I'm sure many of you have heard this college name, Indian Institute of Science, Bangalore. It's one of the reputed colleges not only in India but across the globe. It's many IITians die to get inside this college called Indian Institute of Science, and this college has a reputation for students who want to pursue his career in research, basically research in science fields. So this college is like a heaven for those. Now, this exam is conducted from the last year. It started conducted in CBT mode, that is like computer-based testing, that is the online mode. Now, why do we have to give this exam? Okay, it's a national level fellowship program. Why do we have to give this exam? First of all, the very reason that you are preparing for IIT JEE, the reason is that you are going to compete with all the students of present 11th and those in the coming year. You are going to compete with them, and those students are the ones who are actually going to appear in KVPY. So if you get some rank in KVPY, that means you have got a standing in these exams as well. In fact, those who clear KVPY is considered to be, if I don't say tougher than advanced, but it is like as good as advanced. If you are like cracking KVPY, it means you are surely going to crack IIT, you are surely going to get into IIT, or even worst case scenario, you are going to get into NIT. So first thing, the benefit comes that it tells you your potential, it tells you your standing, where do you stand, and it gives you a good experience, that simulation, you can say that, okay, how this IIT JEE competition is going to be. So if you are going to do really good in KVPY, you have a very, very fair chance to do good in your IIT JEE exam as well. The second thing I would like to tell you about this KVPY exam is that the reputation it comes with. If you are a KVPY scholar, and if you are sitting among the academicians, if people know that you are a KVPY scholar, the respect, the academic standing, it has no match. So it is like a badge of honor. So if you are a KVPY scholar, you are holding a badge here, and everybody recognizes that, oh God, you are a KVPY scholar.
Third thing, you can get admission in if you want to pursue research and you want to do research in basic sciences. This institute takes you directly, that Indian Institute of Science, Bangalore. Then you have so many IISERs. Then you have this triple IT Hyderabad. They have like they call all the students who are like KVPY. They are like KVPY scholarship holder. They call them. They conduct a separate test and interview for them, and they give them the seat also in their college. So you can also get admission in these colleges through KVPY, and this exams like has such a strong reputation. Now, fourth thing, why Government of India is conducting the exam? Because Government of India wants talented students like you people to pursue academic career in the field of sciences, in the field of research, in the field of basic sciences. So this is a way to motivate, to attract and motivated students and help them financially in up to their pre-PhD level. So Government of India gives you scholarship not only till your bachelor's but also till your pre-PhD level. But these scholarships remains valid only if you are pursuing courses in basic sciences, like if you are doing courses like in BSc, BStat, BMaths, or integrated courses of MSc or MS 5 years. So if this is how the Government of India gives you the scholarship. So apart from the scholarship, what is the idea is that the package it comes with, the reputation it comes with, your standing it brings. So it's like it becomes a very, very important examination. Now, if you ask me who all can give this exam, so basically this exam is conducted for 3 class of people, or you can say 3 stream. One stream is called stream SA, the other stream is called SX, and the third stream is called SB. Now, stream SA are exam for those who are in class 11. So your stream is going to be stream SA. For those who are studying in 12, their stream is going to be SX, and those who are in first year of their bachelor program of BSc and integrated MSc, so they can also appear, and their stream is called SB. So we'll be talking about stream SA, because what is relevant for you for class 11 students. Now, the minimum eligibility required for this exam, like if in class 10, if you are a general student, your score in mathematics and physics and science should be 75% minimum. So if you are a general candidate, you are eligible for this scholarship only if you score 75% in mathematics and in science. And if you are a SC, ST or PWD, person with disability, then your bar goes to 65% in mathematics and 65% in science. Apart from that, to have this to get the benefit of this scholarship, you are supposed to take courses in basic sciences only. Don't worry that you have to be like, even if you want to pursue engineering, that's okay. This exam can be given, though you will not be benefited for the scholarships and whatever the packages come with it. But at the same time, if you crack this exams, it gives you extra advantage in your CV. It tells you about your standing. So it's okay if you are not getting the sum from the Government of India if you are pursuing engineering. But even like if you want to pursue some integrated MSc courses in IIT, then also Government of India keeps it eligible to have this KVPY scholarship. Okay. So this is the idea of KVPY. Now I'll talk about the pattern of this exam. Now this exam, this aptitude test is basically, it's not an easy exam. First of all, I'll tell you, this exam is considered to be the little difficult exam, as difficult as IIT JEE Advanced, or little less or little more, you can say. It depends on how you are interpreting things, but it is considered to be one of the difficult exams. The other thing, the level of mathematics in this exam is little higher. So in class 11, they expect many portions of class 11, as well as there are syllabus of class 12 as well, but they don't expect you to have the in-depth knowledge of class 12. But if you, whatever you have studied in 10th and little advanced of 10th, then also you would be able to handle that. And for that only will be, whatever the lectures will be conducting focusing on that exam only.
So looking into the pattern, if you ask me, the pattern of essay stream, essay exam, as you can see on your screen, you see you have to give 4 subjects. I just missed giving you 1 point. If you are in class 11th, biology is also must. If you are in class 12th, then you can choose between biology and mathematics. But in class 11th, all the 4 subjects comes into the picture. Don't worry about biology, we'll also be taking care of biology, everything. Don't worry. So we'll be just focusing about this exam, and this exam is giving to give you an experience. That experience is very important. If that experience, see, whenever I tell students when they are preparing or they are getting ready for a journey called IIT JEE or any competitive exams, they should not worry about the outcome. They should enjoy the journey. Because this journey has an experience which tells you many things, which gives you a lifelong lessons. So always remember, outcome is not important. What is important is the journey. So we always say work is thy duty, reward is not thy concern. So you should always be ready with working, putting all your energy. And as I have told you, I've clearly told you why KVPY exam is important. If those benefits sets align with your bigger goal, then I am sure you have a strong purpose for this exam. If it doesn't align, you don't want to do anything with KVPY, you can ignore it. But at the same time, this experience is something which is going to align with your bigger agenda. So I am sure many of you would be motivated for this exam. Now, talking about the pattern of this exam, you can see if you are in class 11th, you have to give all the 4 subjects: mathematics, physics, chemistry, biology. As you can see, there are 2 parts. Paper would be coming in 2 parts, part 1 and part 2. You will be having 15 questions in mathematics from part 1 and 5 questions from part 2. Similarly, physics, chemistry, biology. So you will be getting 60 questions from part 1 and 20 questions from part 2. And each question of part 1 carries 1 mark and each question of part 2 carries 2 marks. So that makes it 100 marks. At the same time, the exam always comes with a lot of instructions. You can handle those instructions, whatever the negative marking criteria and all. So this is basically the pattern of stream essay. Now if you talk to me that, okay sir, syllabus क्या है, वेटेज क्या है, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा वक्त देना है, किस पोर्शन पे हमें कम वक्त देना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस, मैंने इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी एनालिसिस देखी, उसके बाद जो हमें निकल के आया वो मैं आपके लिए लाया हूँ. अगर आप देखिएगा तो स्ट्रीम ऐसे, अगर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेटेज की बात करें तो मैंने अपने फिजिक्स एक्सपर्ट से भी बात की थी, उन्होंने भी ये सारे वेटेज बताए थे. तो अगर आप देखोगे तो आप देखोगे मैकेनिक्स को 25% का वेटेज मिलता है. ना मैकेनिक्स जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, जैसे ही आप क्लास फिजिक्स पढ़ाई स्टार्ट करते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो मैकेनिक्स शुरू होता है. जैसे कि आप मैकेनिक्स में देख सकते हो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, NLM स्टैंड्स फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, WEP stands for work, energy, power and rotation. So this is like a big part, 25%, which your regular class is being carried. These topics are being covered in regular classes also. But KVPY lecture series will have more focus on problem solving, how to solve problems, how to handle problems. So mechanics is like a big thing. So you cannot be casual about mechanics. Electricity, again, this is a topic of class 12, but at the same time you have learned in class 10th. You have studied this electricity, so it would be little higher than 10th and little lower than 12th, so don't worry about that. So optics is also your class 12th thing, but you have studied in 10th, so few chapters you will see that it is coming from class 12, but it is actually not asking up to class 12th level, it is asking up to class 10th level or little higher, and that is what we will be covering in our lecture series. So these are the weightage. You can look into it. At the same time, you can consult with your physics teacher also, and whatever the classes would be there, it would be there. So you can take a shot here. In mathematics, which is the difficult one in all the 4 subjects, this difficulty level of mathematics is little higher in KVPY. And you can see the weightage of algebra is 30%, permutation combination is 5 to 10%. Number system is something like off track of IIT JEE. Many of you must have studied PRMO and you must have appeared in PRMO. I know many students who did really well in PRMO, and many of you actually cracked it. So I'm sure with number system and many of you might be preparing for PRMO this year also. So geometry and number system is a little off track from IIT JEE. So they will be, though that portion becomes difficult, but those students who have an experience of PRMO or preparing for PRMO, they won't feel stuck here and they would be able to smoothen up.
Many students don't know what comes in algebra. Algebra, as we are already covering equations and integration chapter, then they would be asking complex numbers, sequence series and binomial, permutation, combination, number system, geometry and functions. So lectures would be totally based on these topics so that you have a better chance of cracking this exam. Similarly, in chemistry, you have 20% weightage from stoichiometry. Stoichiometry comes with mole concepts and the redox reaction. I'm sure mole concepts आपके चल रहे हैं. तो उसी तरीके से organic also has a bigger weightage. Atomic structure comes from the other class at the same time. Whatever these topics are, it would be whatever this KVPY lecture series would be totally focusing on KVPY, their weightage and all. So you have to be very clear. In biology, you can see. In biology, you have cell, plant physiology, biomolecules, human physiology, genetics, and you can see the weightage and all. So don't worry about it. We'll be taking care of things. That is why we are starting this KVPY series. We are beginning this series with mathematics. We will be giving you 2 lectures every week. So some tidbits you need to know about this mathematics KVPY lectures. See, every lecture will be assigned with 1 assignment sheet. So whatever teachers are teaching in lecture 1 and they are discussing the theory, at the same time they will be discussing questions. That would be followed by 1 assignment which needs to be finished. I am repeating it, which needs to be finished before starting the lecture 2, because lecture 2 first 50% is going to be based on discussion done on the sheet 1. So you have to be very clear. Only students who are pretty serious would be able to follow this. So you have to be very well motivated for this exam. So first lecture, you would be given a sheet. You have to do that sheet. You have to come with all those doubts and all. You can email the doubts to the teachers, to the mentors, to the counselors. That would be covered in the next lecture. At the same time, you have to know that next lecture is totally based on the sheets which have been provided in the last class. Then discussion of the sheet would be followed by few questions and the next new sheet. So this pattern would be there. So in KVPY would be focusing more on your rigorous answer writing skills, rigorous solving skills. So problem solving skills is the one which we are going to focus on in mathematics, in physics, and chemistry, and biology. So you have to be very clear that okay, whether I should go for it or not. And I'm sure if you choose for this, it's going to benefit you in the long run as well. Okay, bachcho, so let's begin our lecture. This is what I wanted to talk to you about KVPY. I hope this session helped you. I'm sure आप लोग अब research भी करोगे KVPY पे. आप लोग ज़रूर अपने इंटरनेट पे खोजो, कुछ पुराने पेपर्स होंगे, try to look into it, see आपको जो क्लास 10 के सवाल हैं वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं. Just take a look. Just try to see कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं. Even like if you are able to see 10 to 20% भी अगर आपसे हो रहे हैं तो मतलब you are on the right track and will take care of you. So what we need from you is your energy, your passion, so that you can invest in it and we can help you find the right path and right way. And at the same time, outcome is not important. What is important is the journey, this journey of rigorousness, this journey of sweating. This will help you prepare for your bigger exam called IIT JEE, other engineering colleges, medical colleges. So you have to be very clear. It doesn't matter whether you are not at all interested in research program. It's okay if you are not at all interested in research program. That's fine. Then also this exam is important. Okay, let's start our lecture. Today we are going to talk about inequation. See, before we begin, we have already talked to you about the rules of inequality on real number. Now, when we talked about equation and inequation, you must know what do we mean by solution of equation and what do we mean by solution of inequation. See, when I'll talk about equation. Let's say if I say x square is equal to 2x plus 3. So you all know this is a quadratic equation. What is it? It's a quadratic equation. As you can see, the highest degree is 2 and all are polynomial. But what do we mean when we say what is the solution of this quadratic equation? So what you see a left hand side and then you see a right hand side. What you can see is both are function of x. In left hand side you have a function, in right hand side you have a function. In left hand side you have a parabola y is equal to x square, and in right hand side you have a line y is equal to 2x plus 3. The point of intersection of this line and parabola is called the solution of equation. Okay, idea समझ में आ गया? Graphically इसका क्या मतलब होता है? x square is equal to 2x plus 3 हो या fx is equal to gx हो. fx is equal to gx हो, graphically इसका क्या मतलब होता है?
ग्राफिकली इसका मतलब होता है कि fx और gx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। मतलब अगर y इज इक्वल टू fx का कर्व बनाते हो, y इज इक्वल टू gx का कर्व बनाते हो, जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप कहते हो fx इज ग्रेटर देन gx तो आप क्या करते हो, इसका क्या मतलब होता है, ये इन इक्वेशन होता है। तो इसका मतलब होता है रीजन ऑफ x और द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच you always find the curve fx above than gx, and if I talk about fx strictly less than gx, so it means the examiner want you to draw the graph of fx and gx and tell me the values of x for which the curve gx is above fx, right? So this will get clear. जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, let's say मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। लेट्स से मुझे ये इंटरप्रेट करना है, एक आसान सा इक्वेशन ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकली सॉल्विंग? सो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस, I'll draw y is equal to x square with black. So y is equal to x square would be something like, would be a parabola, as you all know. It would be something like this. So this is going to be y is equal to x square. Now if I talk to you about, let's draw it with blue color. Now this blue color, y is equal to x plus 1. So if I have to draw this y is equal to x plus 1, you know when I put x is equal to minus 1, the y becomes 0. So one point is minus 1 comma 0. And when I put x is equal to 0, y becomes 1. So the other point is 0 comma 1. So I can say this line is the equation of y is equal to x1. So the point, this point and this point, this let's say alpha and this beta, this value of x and y is the solution of this equation. Okay, got it? This is what I meant. Let's say I have to solve x square greater than x plus 1, which means I want to find the values of x for which the curve x square is bigger, is above than x plus 1. So if you can see, definitely this region is above and this region is above. So definitely alpha के right में y is equal to x square बड़ा हो जा रहा है और बीटा के लेफ्ट में ये बड़ा हो जा रहा है। तो I can say कि x less than beta union x greater than alpha is the solution of this inequation. And you can find alpha beta. I'm just trying to not find because I don't need to solve it. You know how to solve this question, right? And similarly, if anybody asks you how to solve, let's say I'll change this color. What's the solution is going to be x square strictly less than x plus 1? Definitely now the person wants you to find the values of x for which the curve x square is below x plus 1. So what you can see is this region is where you see y is equal to x square is below this blue line. So you can say this is the answer. So you can say x belongs to, alpha is bigger. So x lies between beta and alpha. And at the same time, they give you this, then you can say this. If they give you this, you can say this. Right? This much you know. So in equation का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? Equation का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है e1x and e2x where x belongs to x, okay, it is तो आपको ये जो सवाल पूछा जा रहा है e1x, इसका मतलब आपको क्या हो गया, values of x for which expression 2 is bigger than expression 1. ग्राफिकली एक्सप्रेशन 2 का जो ग्राफ है वो एक्सप्रेशन 1 से ऊपर होना चाहिए, वो वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो आपको इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर कोई बोलता है डज टू सॉल्व इन इक्वेशन e1x इज स्ट्रिक्टली लेस देन e2x मींस टू फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x on substitution of which the inequation turned into a true numerical inequality. अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हमने ऑलरेडी स्टार्ट की थी जब हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑन रियल नंबर ही सीखा था और बिल्कुल उसी तरीके से ये भी फॉलो करता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो such values of x are called solution of the equation. The set containing all the solution is called the solution set. आपको पता है solution set लिखना, हमने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सारी बातें आपसे ऑलरेडी वेवी कर्व में
ये सारी बातें हमने कर रखी है। अगर द इनइक्वेशन इवन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, तो इस कॉल्ड स्ट्रिक्ट, मैं बार बार कहता हूं। और जब ये इक्वालिटी साइन आ जाता है तो आप उसको स्लैक या नॉन स्ट्रिक्ट भी कहते हैं। इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। इट चेंज दिस डेफिनेशन, दिस वर्ड, दिस टर्मिनोलॉजी चेंजेस विद टाइम टू टाइम। Two inequations e1 x is strictly less than e2 x and e3 x is strictly less than e4 x are said to be equivalent on set x if every solution of the first inequation is also a solution of the second inequation, and conversely every solution of the second inequation belong to the set x is the first solution। मतलब कहने का कि ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन आप देख रहे हो और दूसरा इक्वेशन देख रहे हो। अगर इसका सॉल्यूशन ए सेट आता है और इसका सॉल्यूशन भी सेट ए आता है, तो ये दोनों क्या होता है, हम कहते हैं दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट है। अंडरस्टूड? दिस इज द आइडिया। तो ये इनइक्विवेलेंट की इसलिए बात कर रही है ताकि हम अपने जो रूल्स हैं, जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जैसे हम इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे इक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेम चीज़ ऐड, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट, सेम चीज़ मल्टीप्लाई, सेम चीज़ डिवाइड बोथ साइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनइक्वालिटी को हैंडल करते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी को फर्क ना पड़े, इसलिए वो रूल समझना होता है सो दैट हम उसके इक्विवेलेंट पार्ट में जाएं। जैसे अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 4, तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों इनइक्वालिटी इक्विवेलेंट है, क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया है, तो मैंने इसके इनइक्वालिटी को बदला नहीं है। सो बोथ इनइक्वालिटी वुड बी कॉल्ड इक्विवेलेंट और इनके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज। सो डोंट वॉक डाउन की सर ने इतनी बड़ी बड़ी भाषा क्या कह दी। So if I say e1x is strictly less than e2x and e3x is strictly less than e4x, if I solve e1x is strictly less than e2x, the solution set is, let's say, A, and if the solution set of e3x is strictly less than e4x is A, and both solution set is exactly same, then we can say both the inequations are equivalent. Okay, so I can say x square is strictly greater than 3 and x square plus 4 is strictly greater than 7. They are also inequivalent because the solution set is going to be same. In some cases, the given inequation can be reduced to a simpler inequation equivalent to the given inequation by successive transformation. This is what I said in English भाषा में आपको इस तरीके से लिखा रहता है। I'm sure आप सारी चीज़ों का नोट ले रहे हैं। I create these language so that you don't have problem in making notes. These slides are meant only for your clarity, for your help. Okay, so please do take notes from these slides which I have made. You can take a screenshot, but always write in your own language. Try to read, try to understand, and then write it in your own language. Why do I ask you to write it in your own language? There is a strong logic, there is a strong reason. See, if you are not writing in your own language, if you are writing everything in my language or from the book language, see, you are going to forget. Why? I'm telling you. This journey is of 2 years. This is a 730 days marathon. Next year, you will be bombarded with class 12 syllabus. 11th syllabus would be a difficult one and a bigger one. In the month of September, October, when your board exam starts approaching, you will get a strong feeling that you have forgotten your class 11th. And once this feeling comes in, you lose the track of your exam. So similarly, what will make you help to stay in the track? And at that time, when that feeling creeps in that you have forgotten class 11, then when you open your magical notebooks where you have written things in your own language, then you will see that no, I have not forgotten. These are my language. This is what I found. This is my discovery and I cannot forget it. I remember I was cleaning up my stuff from my boarding school few months back, and then I accidentally fell upon my class 8th diary, and then I started reading. I had a very amazing habit of writing diary in my school days. I don't know when I forgot to write diaries, but really I felt bad that when did I become so mature and adult that I stopped writing in this diary? Because writing diary is one of the beautiful things you can have. It tracks a strong time. It gives an amazing feeling. So when I was reading those pages, every day was crystal clear. I was in the year 2001, 2002, and every day, every evening was crystal clear. I remember the events which I penned it down. Similarly, if you are writing a notes, you are creating a notes, so whatever I am saying, this becomes crystal clear even next year, even next after next year. And when I came into teaching, I just remember opening my class 11th, 12th
IIT JEE notes and everything was so clear that okay, I haven't forgotten mathematics from IIT JEE. So it's like it has a strong advantage. I have like, it's my personal experience. So if you trust me, please, please, please write, make notes in your own language. Okay, so this is what I talked about. Now coming to the rules of inequality. So first rule, as you can see, it's written expression 1, even x means expression in x. That's it. That expression could be any function. It could be polynomial, it could be trigonometry, it could be logarithmic, it could be exponential, it could be any function, any real value function. So if I say even x, expression 1x is strictly less than expression 2x, then if you multiply minus sign, when you multiply minus sign both sides, the sign reverses. The sign reverses. If you remember the rules of inequality, if a is greater than b, then minus a is strictly less than minus b. If you remember, same rule goes for the expression. So even x is strictly less than e to x. If I multiply minus both sides, the inequality reverses. Always remember this. This is like a golden rule. The second rule, if even x is strictly greater than 0 and e to x is strictly greater than 0, then even x is strictly less than e to x, then the reciprocal. See, tell me, if I ask, just forget about this rule. I'll just ask one question. If I say a is greater than b, then what we can say about 1 upon a, 1 upon b? What we can say about this inequality? My answer is I cannot say anything. Why? Because I don't know what the sign of a and b is. If I say 4 is greater than 7, then if I say 4 is greater than 3, let's say, then definitely if I take the reciprocal, 1 by 3 becomes bigger. When they are positive, it's fine. When I say 4 is greater than minus 5, then 1 upon 4 is strictly greater than minus 1 by 5, because positive is always greater than negative. So this defies it. So I don't know whether they are of same sign or opposite sign. And let's say if they are of opposite sign, minus 4 is greater than minus 9, let's say. So minus 1 by 4 and minus 1 by 9, बताइए कौन बड़ा होगा? Definitely 1 by 9 और 1 by 4 में 1 by 4 बड़ा होता है, लेकिन माइनस करते ही कौन बड़ा हो जाता है? माइनस 1 by 9. तो आप देख रहे हो, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो साइन रिवर्स कर रहा है रेसिप्रोकल लेने में, लेकिन अगर अपोजिट साइन में नहीं हो रहा है तो अब इतना झमेला हम याद रख नहीं सकते. देखो, जब नेगेटिव करना था, जब हमें दोनों तरफ माइनस लेना था, तो वी वर कैजुअल, इट्स ओके, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, माइनस मीन साइन विल रिवर्स. रेसिप्रोकल में आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों पॉजिटिव ले लो. तो आप जब श्योर हो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 पॉजिटिव है, तो उसके रेसिप्रोकल लेने से साइन रिवर्स कर जाता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू put the condition that both the expression should be positive. You can say that both the expression are negative, then also it's fine, but still why do we have to get into so many variations? So you can just remember that if even x and e to x both are positive, only both are positive, then the reciprocal will reverse the sign. The reciprocal will reverse the sign. Always remember this. Okay. Rule number 3. It's like very simple. If I say even x is strictly less than e to x and e3x are defined expression on set x, and I added, it is important, defined. You cannot take randomly any function which are not defined on that set. So you will come to know when you will learn more into function, you will get more into the domain and range of the function, then you will understand exactly what this constant is. But right now you can be casual about it. You can say that okay, if I add both expression on the same side, or if I subtract both expression on the same side, if I add or subtract both expression from the same side, both expression at the same at both the sides, it means the inequality will not change. मतलब आप कोई भी चीज़ एक दोनों तरफ सेम रखते हो या दोनों तरफ सेम निकालते हो तो inequality में फर्क नहीं होता. Similarly, if I say even x is strictly less than e to x plus e3x, then even x minus e3x would be strictly less than e2x. How do we come to this? Because we subtracted e3x at the both sides. So if we subtract both same expression at the same time, but at the both sides, then the inequality has no
problem. Okay, so three things we have learned. If you have even x is strictly greater than e2x, if you want negative signs to be multiplied both sides, the sign reverses. Even x is strictly greater than e2x and you want to take a reciprocal, you have to ensure that both are positive. If you are damn sure that both are positive, then you can take the reciprocal, and once you have taken the reciprocal, you can say the sign reverses. Third thing, if like even x is strictly greater than e2x and if you add or subtract same expression on the both sides, then the inequality remains unaffected. You have to but ensure that whatever the functions you are adding, they are well defined on that set. Now fourth rule, if I say there is like even x, e2x and e3x defined on set x and e3x is positive, और आपको दे क्या रखा है इनिशियल कंडीशन even x is strictly less than e2x, then if you multiply e3x both side, then the sign do not changes because expression क्या है e3x positive. तो अगर आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स नहीं करता, लेकिन आप तभी मल्टीप्लाई करोगे कोई भी एक्सप्रेशन बोथ साइड only if you are damn sure, only if you are damn sure that that is positive. Let's say if you want to multiply x square, that's okay. If you want to multiply x square plus a, that's okay. You want to multiply mod x plus 3 both sides, that's okay, because you know these three expression will remain always positive. But someone give you something like, let's say x square minus 1, can you multiply this both sides? No, because x square minus 1 becomes negative for values between minus 1 and 1. So you have to be very sure about what is that set x and whether that expression is damn sure, you are damn sure that it is positive or not. Okay. So these four rules I'm sure you understood. Now this is like a tricky one. This one, like even x is strictly greater than e2x, then see the initial condition is very important. इसके लिए भी मैं बोलूँगा, if I say a is greater than b, what can you say about a square and b square? I'll say I cannot say anything. Why do I say I cannot say anything? Because I don't know anything about a and b. Why? I'll just give you example. If I say 7 is greater than 2, if I say 7 is greater than 2, that's okay. 49 is greater than 4. So I know if both are positive, I can handle it. If I say 7 is greater than minus 3, if I say 7 is greater than minus 3, okay, so 49 is still greater than 9. Okay, fine, no problem. But when I say 7 is greater than minus 10, 7 is greater than minus 10, then 49 is less than 100. यहाँ पे साइन रिवर्स कर गया, अपोजिट साइन में भी दो कहानी आ गई. देखिए इस कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसमें दो फर्क आ गया. फिर उसके बाद आपने बोला कि ओके सर minus 7 is greater than minus 9. What about squaring it up? 49 is definitely less than 81. So what is the idea? Sign is reversing when both are negative. Sign is not reversing when both are positive. The quarrel comes, the problem comes when both are of opposite sign. So instead of getting into so many variations, what we have to do, whenever we have to square, we have to be first doubly sure that both the expression left hand side and right hand side both are positive. If we have an iota of doubt about their positivity, if we have even an iota of doubt about their positivity, we should not at all square it up. We should only square it up only when we are damn sure that yes, that thing is positive no matter what. Then we can square it up to solve our inequation. Coming next. Now before solving this inequation, I would like to give you one theory before attacking this. I'll tell you how to handle mod inequality. How to handle mod inequality. If someone asks you something like, let's say if I give you mod x is greater than a, आपको ये इनिक्वेशन सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है? mod x is strictly greater than a. अब a की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0. ठीक है, अगर मैं को कह रहा हूं आपको कि mod x is strictly greater than a, तो a या तो पॉजिटिव होगा, a या तो नेगेटिव होगा. If I say mod x is greater than a where a is negative, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बताइए? x क्या क्या हो सकता है? आपको पता है mod x में आप कुछ भी डालो, mod x में कुछ भी डालो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना पता है आपको.
और मॉड एक्स में 0 डालो तो 0 होता है। तो आपको पता है कि सारे रियल वैल्यूज कुछ भी डालो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा, क्योंकि ए एक नेगेटिव नंबर है। ए क्या है? नेगेटिव नंबर। तो आप कह सकते हो इसका सोल्यूशन x बिलोंग्स टू r। इस केस के लिए आप बड़े आराम से कह सकते हो। अगर कोई कहता है मॉड x इज ग्रेटर देन -3, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर? ऑल रियल वैल्यूज। आप क्या बोलोगे इसका आंसर? ऑल रियल वैल्यूज। प्रॉब्लम कब आती है? जब हो जाता है a ग्रेटर देन 0। तो अब आपको पूछा जाता है मॉड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a वेयर a इज पॉजिटिव, वेयर a इज पॉजिटिव। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now, for solving this inequation, I have two methods. One is solving through algebra and the other is solving through graph. One is solving through algebra and the other is solving through graph. So first I'll take the help of algebra and then I'll take the help of graph also for handling both the cases. So if I say mod x is strictly greater than a, what do you know about mod x? Do you definitely know that mod x is a positive quantity? Yes, because mod is always a positive quantity. Whatever value you put, it is a positive quantity. Do you know about a? Of course, it's given that the case that a is a positive. And what exactly is mod? How do we get rid of mod? By squaring it up. Because you all know what exactly is mod. If someone asks you to define mod, you can say under root x square equivalents to mod x. So mod x is basically square root of x square. So definitely to get rid of mod, what you can do algebraically, you can take the square. And are we cool to take the square? Because yes, we are cool to take the square. Why? Because we are doubly sure that both the sides are positive. So I'm just squaring it up. So I just square it up, I get x square is greater than a square. Right? Because the sign doesn't, if you have forgotten, look at the rule. We talked about the fifth rule. If e1 x and e2 x are positive and e1 x is strictly less than e2 x, squaring it up, the sign remains same. So same concept I used. Okay, coming back. So I can say x square is strictly greater than a square. Now definitely I know a square is a positive number. I can subtract both sides. I can say x square minus a square is strictly greater than 0. You have already solved wavy curve, so this is like an easy pie for you now. So you can say x plus a into x minus a is greater than 0. Now if you have to do it on number line, what you're going to say? You're going to say, okay, this is my number line, and this is a and this is minus a. This is going to be positive, this is going to be negative, this is going to be positive. So I need which region? I need positive region. X plus a into x minus a. So answer is going to be this and this. So I can say x belongs to minus infinity से minus a union a से infinity. And I am sure अगर equality होता तो minus a और a दोनों accept हो जाता। अब ये तो हो गया वेवी कर्व जो अलजेब्रा को हमने यूज किया था। क्या मैं इस चीज को ग्राफ से समझ सकता हूँ? तो देखिए ग्राफ से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आप ग्राफ से देखो तो पहला केस पहले ले लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। मॉड x को मैं मान लो पिंक से बना देता हूँ। तो मॉड x वुड बी समथिंग लाइक दिस V shape, right? So everybody know what this mod x is. This is V shape. And let's say ये आपने ड्रॉ किया पहले y is equal to mod x with pink color, फिर आप ड्रॉ कर रहे हो y is equal to a because this is the right hand side, और इसको आप ब्लू से लाइट कर रहे हो और डेफिनेटली a पॉजिटिव है। तो ये समवेयर लेट्स से a यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जो इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सो यू कैन से this is the equation. So pink is mod x, pink is y is equal to mod x, and blue is y is equal to a. Now you know this point is definitely a and this point is definitely minus a. So someone asks you where mod x, where pink is above blue, because mod x is pink and a is blue. So someone asks you where pink is bigger than blue. So definitely I'll just use let's say green color to show this. So I can say these are the area where
you can say that pink is bigger than blue. So I can say this region is one solution and the other solution is this region, because here is the region above blue. The pink is above blue. So you can say, okay, graphically I can definitely say that minus a से नीचे और a से ऊपर y is equal to mod x, y is equal to a से बड़ा है. और डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ a नेगेटिव है, लेट से अगर मैं रेड से बना दूँ a नेगेटिव, लेट से, तो a नेगेटिव यहाँ चला गया, y इज इक्वल टू a. अगर a नेगेटिव है तो अब क्या हो गया, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज दिस पिंक इज अबव रेड लाइन. सो यू कैन से ओके आई नो नाउ. सो ग्राफिकली भी आपको समझ में आ गया और अल्जेब्रिकली भी आपको समझ में आ गया. तो व्हाट इज टू बी टेक what nuggets to be taken from here? So if someone asks you mod x is strictly greater than a, तो आप बोलोगे for a greater than 0, for a less than 0 you can say x is either less than minus a union x is strictly greater than a. और अगर आपसे पूछे a is strictly less than 0, इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, आप बोलोगे x belongs to r. और उल्टा अगर पूछता है आपसे कोई कि mod x is strictly less than a, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, डेफिनेटली a पॉजिटिव है a नेगेटिव है. अगर कोई बोलता है mod x is strictly less than a where a is negative, तो आप बोलोगे x belongs to 5, बिकॉज ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा mod का जो नेगेटिव से छोटा हो जाए. तो आप इसको कहोगे 5, इसका हो गया रियल, तो आप इसको कहोगे 5. और जब आपसे कह रहा है कि राइट हैंड साइड बड़ा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ब्लू रीजन कहाँ कहाँ पे ऊपर है पिंक से, तो डेफिनेटली आपको पता है माइनस ए से ए. सो यू विल से द सॉल्यूशन इज माइनस ए से ए. सो ऑलवेज रिमेंबर mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए का क्या आंसर होगा, mod x स्ट्रिक्टली लेस देन ए का क्या आंसर होगा. हमने ग्राफिकली भी समझा था, हमने अल्जेब्रिकली भी समझा. आइए पढ़ते हैं. अब जैसा कि क्वेश्चन है पहला, आई एम श्योर ये सबके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है. क्या लिखा हुआ है, mod x plus 1 is strictly less than 3. Instead of attacking this problem, you can directly say कि अगर मैं कहूँ mod कचड़ा is strictly less than 3, इसका मतलब क्या है, कचड़ा lies between 3 and minus 3. गौर से देखो, if I say mod x is strictly less than a, इसका मतलब x between minus a से मतलब x lies between minus a से a. You can say this. So similarly, I can say this, that okay, whatever mod is there inside, when I open it up, it will definitely lie between 3 and minus 3 and 3. And what is the kachada? You can say minus 3 is lying between x plus 1 is lying between 3. Now you have to get rid of plus 1 from x. So what you are going to do? You are going to subtract minus 1 in all the three expression. And the moment if you subtract same thing from the same expression, the inequality doesn't change. So you can say minus 3 minus 1, x plus 1 minus 1, 3 minus 1. So what you can say, x lies between 2 and minus 4. So this is going to be your answer. So you can say x belongs to minus 4 say 2. Whatever way you can write. This way is also fine. This way also fine. Both way is acceptable answer. So you see this question, you don't have to get into algebra every time squaring it up and all. But when you forgotten the case, you can go with that same thing. Okay, sir, I'll square it up. Mod x plus 1 is less than 3. So definitely this is a positive, this is a positive. So I can square it up. So I can say x plus 1 whole square is less than 9. And then you can do all the calculation. You will come up with the same answer. So both way, it's fine. Okay. Now other thing, the mod x square. Come to the next question. So the next question is mod x square plus 1 is strictly less than 2x. Mod x square plus 1 is strictly less than 2x. Now you are not sure, because in right side you see 2x. Had it been written x is strictly greater than 0, then it's fine. But 2x is something like a problem. But so 2x seems to be a problem. 2x seems to be a problem, but here is the good news. Mod x square plus 1. What is the good news? Because x square is always positive. Do you agree or not agree? X square is always greater than equal to 0. And x square plus 1 is definitely greater than equal to 0. Which means x square plus 1 is definitely greater than equal to 1. So definitely x square plus 1 is greater than 0. I am very sure about it. आपको समझ में आया? आपके सामने राइट हैंड साइड में 2x था जो आपके लिए बैड न्यूज़ था,
लेकिन जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, देयर इज अ गुड न्यूज. व्हाट वाज द गुड न्यूज? बिकॉज एक्स स्क्वायर is always positive and x square plus 1 can never be negative, not even 0. So you can say कि okay, mod x square plus 1 equals x square plus 1 for all values of x belongs to R. So you can say x square plus 1 is strictly less than 2x, because whenever you are solving an equation containing mod, the first thing is you have to take care of mod, and then you know how to handle algebra and graph, right? So now this question turns out to be x square plus 1 is strictly less than 2x, which means x square minus 2x plus 1, मैंने दोनों तरफ 2x माइनस कर दिया तो क्या हो गया? 0. So you can say x square minus 2x plus 1 is strictly less than 0. So I just subtracted same thing on the same side to make everything 0 on the right and all the expression on the left. Now what you see, x square minus 2x plus 1, I am sure आपको ये expression अच्छे से पहचानते हो, तो आप इसको कह सकते हो x minus 1 का whole square is strictly less than 0. Is it a true statement for any answer? Tell me. A positive number is less than 0. Is it possible? No. So you are going to say no values of x. So the solution set is going to be 5. अगर यहाँ पे less than equal to 0 होता, अगर ये होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता फिर 1. x is equal to 1. लेकिन यहाँ पे क्या है? x minus 1 का whole square is strictly less than 0, means for no such value it can be true. Okay, so I hope you will not forget this. Now let's see the next question. Mod x plus 2 is less than 5x. So whatever the bad news was there in the second question still stays there, and in the left hand side I don't see any good news. So what I see is right hand side is totally, I don't know what exactly it is. I cannot be sure that whether it is a positive or it was negative, because here it says x belongs to R, so it could be positive, it could be negative, and here is something which is like troubling me. Okay, so जब trouble होता है तो we start thinking, and when we start thinking we find solution. Now when you know mod x plus 2, you see x plus 2 equals to 0 कहाँ पे होता है? minus 2 पे. तो आपको पता है कि critical point क्या है इसका? minus 2. आपको क्या पता है mod x plus 2 का critical point क्या है? minus 2. मतलब minus 2 डालते ही 0 होता है. अगर आप कोई नंबर minus 2 से बड़ा रखते हो तो पॉजिटिव होता है, और कोई नंबर minus 2 से छोटा रखते हो तो नेगेटिव हो जाता है. तो आप अपनी पूरी कहानी को दो केस में डिवाइड कर देते हो. एक केस होता है x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और दूसरा कहानी लिखते हो x लेस देन -2. पहले x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2, तो मतलब mod x प्लस 2 क्या होगा? mod x प्लस 2 डेफिनेटली x प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए ये पॉजिटिव बंदा है, पॉजिटिव बंदे के लिए mod सीधे खुल जाता है. तो यू कैन से x प्लस 2 mod x प्लस 2 लेस देन 5x को आप लिख सकते हो x प्लस 2 इज लेस देन 5x. You can write, that's okay, not a problem. Now if you take everything either on the right side or the left hand side, so let's take everything on the, let's take x on the right side. So what you can say, x plus 2 minus x is less than equal to 5x minus x. So you can say 2 is less than 4x. What you can do, you can divide both sides, so you'll get half is less than x. So you can say x is strictly greater than half. So x is strictly greater than half. आप सीधे आंसर नहीं लिखोगे, आप इसको चेक करोगे इसके साथ, कि इसके साथ अलाइन है कि नहीं. मतलब आपको जो भी आंसर आएगा ये आपको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है. क्या लेना है? इंटरसेक्शन एंड कंडीशन, ओवरलैपिंग. आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ इंटरसेक्शन क्या होता है. तो आपका जो भी आंसर इसका सॉल्व करने से आया है उसको आपको इसके साथ करना है, क्योंकि दिस इज द डोमेन, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो. तो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ, इंटरसेक्टिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो डेफिनेटली बोथ आर इन सेम पेज. तो आंसर वुड बी x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ is an acceptable answer. But this is not a complete answer, this is just a half answer, because we still have to solve here. X is strictly less than -2. Now let's say x is strictly less than -2, what we are going to do? आपको पता है mod x plus 2 is less than 5x, और आप -2 से कोई भी नंबर डालो, -3 डालो, क्या हो जाएगा? -3 plus 2 -1. उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई. तो इसको ठीक करने के लिए ओपन, अगर मैं mod को ओपन करता हूँ, देखो मैं स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता राइट साइड में क्या है.
तो मैंने x+2 की क्रिटिकलिटी को लेके ये कर दिया, तो मैंने इसको ओपन अप कैसे कर दिया, माइनस ऑफ x+2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5x। अब उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, -x-2 is strictly less than 5x. Now I can add plus x both sides, so -x-2 plus x is strictly less than 5x plus x. So which makes it -2 is strictly greater than 6x. If I divide both sides by 3, I'll get -1/3. So x is strictly greater than -1/3. X is strictly greater than -1/3, which is not in compliance with x is strictly -2. X is strictly greater than -3 is not in compliance. If I take the intersection, there is a phi thing, matlab there is no such thing which connects them together. So I can say for this case the answer is phi, for this case the answer is this. इन दोनों का यूनियन क्या होगा, x greater than half. So final answer is greater than half, जिसको आप लिख सकते हो answer is half से infinity. ओके बच्चे लोग, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टाइम केवीपी में ज़्यादा चला गया है, तो जल्दी से मैं मॉड वाला हैंडल कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल इक्वेशंस की बात करेंगे। तो आपको जो आंसर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो असाइनमेंट मिलेगा वो मॉड पे ही मिलेगा। ओके, मॉड x² - x - 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। ना अगर आप इसमें सोच रहे होगे कि मैं मॉड लेके काम करूँ, मॉड को हटाने के लिए स्क्वायर कर दूँ, तो आप गड़बड़ सोच रहे हो। लेकिन आप ये तो जानते हो ना, मॉड कचड़ा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 का आंसर क्या होता है। कचड़ा इज ईदर लेस देन -4 और कचड़ा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। आपको ये तो पता होगा, ये जो रिजल्ट हमने देखा था, है कि नहीं। इफ आई से मॉड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4, तो x इज या तो ग्रेटर देन 4 है या x इज लेस देन -4 है। नाउ कचड़ा इज समथिंग लाइक x² - x - 2। तो कचड़ा को डिकोड करके आप क्या लिख सकते हैं, x² - x - 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन -4 और x² - x - 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। ये दोनों दो केसेस हैं, ये दोनों दो केसेस हैं। अब हमने दोनों को सॉल्व करना है। अब इसको कह सकते हैं x² - x - 2 + 4 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो -4 + 4 क्या हो गया, 0 हो गया। ये बन गया x² - x + 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और ये हो गया x² - x - 2 - 4 is strictly greater than 0, which means x² - x - 6 is strictly greater than 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो और इन दोनों का यूनियन ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए x, इसके रूट्स पहले निकाल दो, -1 + -b² + 24/2, which makes it -1 ± 5/2, which makes it -3 और +2, -3 और +2. So you can say, I'm just solving this one first. Let me solve it with green color. So x² - 6 can be written as x + 3 into x - 2 is strictly greater than 0, which makes it 2 - 3 plus minus plus. What I am looking for? I am looking for a plus region. So the answer is going to be, for this the answer is going to be -infinity से -3 union 2 से infinity. This is the answer for this case. And OR condition means union. आपको पता है. Let's solve this. Just a sec. This is going to be +1. I did some mistake here. This is going to be +1. So this is going to be +3, and this is going to be -2. So this is going to be -3, and this is going to be x + 2. Just pardon me. And then you can say the answer is right. ठीक रूट निकाला ना, देख लो एक बार फिर से. Product is -6, that's fine. The sum is +1, that's fine. Okay, so I can say -infinity से -2 union 3 से infinity. Same way, if you look into x² - x + 2, let's take the color blue. So इसको देखें तो 1 ± b² 1 -8
So definitely no root is existing. When no root is existing and when it says x square minus x plus 2, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे, आप देखोगे कि ये ग्राफ अपवर्ड होता है. आप लोगों को क्लास 10 का अगर ग्राफ याद होगा तो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड होता है, और नो रूट्स हो तो मतलब ये हर वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होता है. दिस एक्सप्रेशन हर वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होता है. अगर आप लोगों को याद हो क्लास 10 में जो ग्राफ पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर से हम ग्राफ पढ़ेंगे. लेकिन अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स रियल नहीं है और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप कहते हो कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो आप कह सकते हो इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0. तो इसका आंसर हो गया 5. तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. आप इसका आंसर इस तरीके से समझ सकते हैं. x minus 4 by x minus 2 is greater than or equal to 2. I have already told you the trick. Mod kachada is greater than equal to 2 means kachada is greater than equal to 2, or kachada is less than equal to -2, and then you can follow the drill. What you need to do is solve this inequation and find your answer. Let's say you get your answer as R1, and then the other is x minus 4 by x minus 2 is strictly greater than 2. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने strictly less than equal to -2, और का मतलब होता है यूनियन. Solve this, get your answer R2. Final answer is going to be R1 union R2. This is how you are going to solve this inequation. Same way, if you see solve x square minus mod 6x plus 5. Here the idea is either you can take both things on the right side, but at the same time squaring it up adds up the answer. At the same time the equation goes into the 4 degree. So avoid doing that. What you have to do is think of a critical point. 6x plus 5. 6x plus 5 आपको 0 से इक्वेट करो तो क्या होता है? x इज इक्वल टू -5/6. तो आप अपने दो केस बना लो. दो केस बनाओ. एक केस होगा क्या? एक केस होगा x इज ग्रेटर देन -5/6. तो डेफिनेटली व्हेन यू पुट एनीथिंग ग्रेटर देन -5/6 दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. और एक इसको आप इक्वल टू भी रख सकते हो. और यहाँ पे आप केस ले लो x इज लेस देन -5/6. जब आप ये वाला केस लोगे तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव खुलेगा. तो आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0. सॉल्व दिस आंसर. आप इसके लिए कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -6 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0. यू सॉल्व दिस. आपका ये आंसर लेट से R1 आया, ये आंसर आया R2. R1 R2 आपको इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करना है. इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करना है. R1 को आपको इसके साथ इंटरसेक्ट करना है. R2 को आपको इसके साथ इंटरसेक्ट करना है. और दोनों के इंटरसेक्शन के बाद ये दोनों क्या है? केसेस हैं. ये दोनों क्या हैं? केसेस हैं. R2 को इंटरसेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपका आंसर आया A1, और R1 को इंटरसेक्ट करने के बाद आपका आंसर आया A2. तो फाइनल आंसर आपको होगा A1 यूनियन A2, बिकॉज दीज आर केसेस. जैसा कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, केसेस में आप यूनियन लेते हैं, एडिशन करते हैं, और स्टेजेस में एंड में आप इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब आप इंटरसेक्शन करते हैं. ओके, ओवरलैपिंग जोन देखते हैं. तो आपने क्या कहा? आपने R2 को इंटरसेक्ट कराया इसके डोमेन से, R1 को इंटरसेक्ट कराया इसके डोमेन से. इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने से आपका आंसर आया A2. इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने से आपका आंसर आया A1, और फाइनली आपको आंसर सॉल्व कर दिया. तो मैं इसको फिर से एल्गोरिथम लिख देता हूँ. जब भी आप केसेस में बनाएं, नो मैटर आप कितने भी केसेस बनाएं, ठीक है, आप जितने भी केसेस बना रहे हैं, आई जस्ट राइट द एल्गोरिथम. मान लीजिए आप ये D1 के लिए बना रहे हो और ये D2, ये डोमेन 1 के लिए एक केस बन गया, ये डोमेन 2 के लिए 2 केस बन गया. और ये जो एक्सप्रेशन आया और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया, इसके सॉल्व करने से मान लीजिए आपका आंसर आता है R1, और इसको सॉल्व करने से आंसर आता है R2. तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसका होगा R1 इंटरसेक्टिंग D1, और यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसका होगा R2 इंटरसेक्टिंग D2. इन दोनों के ओवरलैपिंग कराने के बाद उसका आंसर यूनियन कर देंगे. दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये एल्गोरिथम आपको ध्यान में रखना है. ये है, देखिए यहाँ पे क्या कहानी है. mod x माइनस 1 इंटू mod x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4. अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई है, दो मॉड्स आ गए हैं. ये दिक्कत देगा आपको. ये क्या करता है? दिक्कत देता है.
तो एट द सेम टाइम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गया है, एक क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गया है, एक हो गया है x1 और एक हो गया है x-1। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब आपका जो पूरा ग्राफ है वो 3 रीजन में बढ़ गया है। कितने रीजन में बढ़ गया है? 3 रीजन में। तो इस बार क्या करना है, इस बार आपको 3 रीजन बनाना है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। रीजन 1 को आप कह लो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप दूसरा कह लो x लाइंग बिटवीन -1 to 1 और तीसरा कह लो x स्ट्रिक्टली लेस देन -1। तो ये आपके 3 रीजन हो गए। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या होगा, डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो आप इसको सीधे खोल दोगे, x-1 प्लस मॉड x-1 प्लस मॉड x+1 इज लेस देन 4 को आप लिख दोगे x-1 प्लस x+1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे। मान लो आंसर आया R1। आप इसके लिए क्या करोगे, आपको पता है 1 से छोटा ही ये नेगेटिव हो जाता है, 1 से छोटा ही ये नेगेटिव हो जाता है। तो मॉड x-1 प्लस मॉड x+1 इज लेस देन 4। तो आपको पता है -1 के राइट में अभी भी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप करोगे माइनस ऑफ x-1, इसको एज इट इज खोल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा R2। यहाँ पे आप आइएगा x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1, मतलब दोनों एक्सप्रेशन अब नेगेटिव हो गया है। मॉड x-1 प्लस मॉड x+1 अंदर दोनों नेगेटिव हो गया है, तो दोनों को पॉजिटिव करने के लिए माइनस ऑफ x-1 माइनस ऑफ x+1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो इसका आप आंसर निकालेंगे R3। R1 का आंसर आप इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे, R2 का आंसर आप इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे, R3 का आंसर आप इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे। इन तीनों से मान लीजिए आपका आंसर आया A, B, C, तो आपका फाइनल आंसर होगा A यूनियन B यूनियन C। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेम वे इस इनइक्वालिटी को देखिए, मॉड x+2 माइनस मॉड x-1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x-3/2। अगेन नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया है, x1 और x-2। तो आप अपने ग्राफ को ब्रेक करोगे, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, आप लिखोगे -2 और 1 के बीच में, और तीसरा लिखोगे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -2। आपको पता है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये एज इट इज हो जाएगा x+2 माइनस बीच में रहेगा, ये x-1 इज लेस देन x-3/2। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे R1। बीच में आपको पता है कि ये नेगेटिव हो चुका है, ये अभी भी पॉजिटिव है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इज लेस देन x-3/2। इससे आप आंसर निकालोगे अपना R2। x इज स्ट्रिक्टली मतलब दोनों नेगेटिव हो चुका है, तो माइनस ऑफ x+2 माइनस माइनस प्लस ऑफ x-1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x-3/2। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे अपना R3। इन तीनों का इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन A आया, इसका इंटरसेक्शन B आया, इसका इंटरसेक्शन C आया, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तीनों का आंसर APC है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द स्टोरी इन केसेस। मॉड x² प्लस x-5 को आप कैसे हैंडल करोगे? अगेन x² प्लस x की क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x² प्लस x 0 से इक्वेट कीजिए। आपको पता है x इंटू x+1 इज 0, तो रूट्स क्या हैं इसके 0 और -1। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपकी जो 3 केसेस बनेगी वो ये होगी, केस रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड देन यू कैन हैंडल। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये सीधे खुल जाएगा x² प्लस x-5 लेस देन 0। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए -x² प्लस x-5 लेस देन 0, और ये अगेन पॉजिटिव है तो x² प्लस x-5 लेस देन 0। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। इसको लेट्स से इसका आंसर आया D3, इसका आंसर आया D2, इसका आंसर आया D1। D1 को R1 के साथ इंटरसेक्ट करके A आंसर निकालिए, D2 को R2 के साथ इंटरसेक्ट करके B निकालिए, D3 को इंटरसेक्ट करके C, और फाइनली A यूनियन B यूनियन C। तो इस तरीके से आप अपने मॉड के इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल इनइक्वेशंस लेके आएंगे और मॉड के आपके असाइनमेंट्स में और आपको मॉड के इनइक्वेशंस दिए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। जस्ट समराइज करते हैं, आपको रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी समझ में आ गया। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में जब E1x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन E2x है, अगर आप दोनों तरफ माइनस सप्लाई करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो इन्वर्स इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली अगर आप
रेसिप्रोकल ले रहे हो तो आप रेसिप्रोकल लेने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ही रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं होगा। चौथे में आप क्या देख रहे हो, चौथे में आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी E1 x और E2 x है और अगर मैं किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें एक इतना इंश्योर रखना है कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन रिवर्स नहीं करेगा। और पांचवा सबसे अहम है कि अगर आपको स्क्वायर लेना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों पॉजिटिव हैं। एट द सेम टाइम आपको पता है मॉड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a का रिजल्ट क्या होता है, मॉड x स्ट्रिक्टली लेस देन a का रिजल्ट क्या होता है। आप उसको मॉड कचड़ा के फॉर्म में भी फाइंडल कर सकते हो। कचड़ा इज जस्ट लाइक ए मेसी एक्सप्रेशन, डोंट गेट इनटू लॉट। एट द सेम टाइम जब आप क्या कहते हैं, आप जब मॉड के इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके पास मॉड से छुटकारा पाने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफ से सॉल्व करना, सबसे देसी तरीका। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्राफ बनाओ, अपने आप आंसर लिखने लग जाएंगे। लेट से अगर आप ग्राफ से नहीं करना चाह रहे हो, आप अलजेब्रा से करना चाह रहे हो, तो आपको ऑलरेडी रूल्स पता है, उस रूल से हैंडल कर लो। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर करना आसान नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लेना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे मॉड के अंदर जो भी चीज़ है वो जीरो का हो रहा है, क्योंकि जीरो के राइट पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट नेगेटिव है। तो आपको बस देखना है किस वैल्यूज पे जीरो हो रहा है, उस वैल्यू को आप क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे और अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आप रीजन देख लोगे। आप मॉड को प्लस मॉड को कैसे हैंडल करना है और माइनस मॉड को हैंडल कैसे करना है। तो मान लीजिए आपने 3, 4, 5 रीजन्स में मान लीजिए डिवाइड कर दिया है, तो 3, 4, 5 रीजन्स में 3, 4, 5 डेफिनेशंस ऑफ इक्वेशन दे दिए हैं। तो आपको वो 3, 4, 5 रीजन में सॉल्व करके उस रीजन के साथ इंटरसेक्ट लेना है और फाइनली सबको यूनियन लेना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टूड मॉड इनइक्वालिटी। आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल इनइक्वालिटी की बात करेंगे और मॉड के प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे और लॉग और एक्सपोनेंशियल की भी इनइक्वालिटी की बात करेंगे। आज हमने करीब 20-25 मिनट अपने KVPY के ओरिएंटेशन पे दिया है, तो आप KVPY के लिए रेडी हो जाइए। बहुत जल्दी आपको KVPY का सीरीज आने वाला है। बी रेडी, बी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, प्रमोद सर आपके मैथ्स के KVPY क्लासेस लेंगे, बहुत स्पेशलाइज तरीके से लेंगे। आप जो भी दिक्कत हो आप उनसे ज़रूर पूछें। मैं भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स लूँगा, तो आपको जो भी दिक्कत आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।